Hi guys, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Goenka and I am doing my BBA from IIM Bangalore. And in this channel, I make content related to IP MAT, CUT and other entrance exams like BBA DBE. In this video, we are going to take you through the journey of how you have to crack the DBE test in the next 2 months. To be very honest, it's a very easy exam, not very much difficult like IIM Indore or other exams. So it's at the par of your CUET or of course, better than CUT for sure. So yeah, you need to work for that for sure and do a lot of mehnat. But this is the Excel sheet which I have prepared, covering all the details and aspects related to how you have to crack and other details. You can download this Excel sheet through the link given in the description box. You can also take a one-on-one counseling session with me and clear all your doubts for just rupees 99. You can also take a mock analyzation session with me where we will solve the mocks together. Okay. Yeah. So as you can see it on my screen, I have prepared the topic list, which topics you have to do for your preparation. Okay. The quants is in the sequence wise, like you have to start from percentages, then profit loss, SICI, and at the last number system. This is what I feel will benefit you to crack the DB test effectively and to score good marks. There's a reason behind why I have taken this logical structure. Then we have logical reasoning. Again, there's a structure, but in the logical reasoning, you can go up and down. Okay, but this is the best pattern you should follow. Followed by VARC. VARC consists of again these topics, and you have to complete them. Okay. देखो हर topic के आगे I have mentioned the maximum days required: 2 days, 3 days, 6 days, 7 days. Right. So you have to not you don't have to give more than those days. Okay. Those days are more than enough to study a particular topic and complete its questions as well. Okay. Again, so logical reasoning me, I have covered two days. Okay? Maximum for each maximum for each of the topics. Then we have VRC. VRC we have the same structure. Then topic and then your practice, like कितने दिन करनी है ना? So that is all of that is mentioned over here. And in the journal awareness, again, you have to get a PDF or a book and उसको 3 days or 4 days a week पढ़ दो and newspapers daily. And there is a website called gktoday.in. You can also try that as it will help you. Okay. I personally was preparing for IPMAT exam, and because of that, मेरा इन तीनों सब्जेक्ट में ऑफकोर्स क्वांट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड वीआरसी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ हो गया था. प्लस आई वांट टू टेल यू दैट कि डीबी टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. देयर इज +1 एंड नो माइनस. ठीक है. सो एज देयर आर नो माइनस मार्किंग, यू नीड टू complete and attempt all the questions. Okay. And like if I want to go with the DB text structure or the pattern of the exam, 20 questions of quants, 10 questions of logical reasoning, 20 questions of against of VARC, and 10 questions of general awareness. Okay. So the exam is on 20th of July. The forms are and the applications are open. If I talk about the previous year, 2024 का पेपर, उसमें क्या क्या पूछा गया था? Because 2024 was the first year the exam was held. So arithmetic was 7 questions, data interpretation 4 questions, modern maths again 2 questions, geometry and mensuration 2 questions, algebra 3 questions, number system 2 questions. ठीक है. So making 20 questions overall. पर this is something you need to keep in mind कि arithmetic and data interpretation consists of 55% of the weightage. ठीक है. So these two topics are the most important. ठीक है. इसीलिए if you will see my structure over here, preparation days, I have completed the arithmetic first because that is most important. ठीक है. और संग में डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स भी आपको रोज एक सॉल्व करना है. ठीक है. अगेन इफ यू विल सी द लॉजिकल रीजनिंग वाला स्ट्रक्चर इट्स गिवन ओवर हियर. पॉज इट, डाउनलोड द एक्सेल शीट, वॉच इट आउट. ठीक है. इंग्लिश का अगेन इट्स रिटन एज द सेम. एक आरसी आई थी और 4 क्वेश्चंस. ठीक है. या देन वी हैव जीए में भी 2 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, 2 क्वेश्चंस ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. So what I am expecting this year? This year I'm expecting कि अर्थमेटिक के भी 7 क्वेश्चंस. आई गेस मॉडर्न मैथ्स में जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आए थे वो बढ़ के साल 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज समथिंग आई एम गेसिंग. ऐसा होना चाहिए होपफुली. एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सेम रहने वाला है लगभग लगभग. और वीआरसी वगैरह भी कुछ सेम ही रहने वाला है बाकी. ठीक है. द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक. अब ये आते हैं कि ये टॉपिक्स को पढ़ना कहाँ से है. ठीक है. सो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आई हैव मेड एन एक्सेल शीट. इस एक्सेल शीट में सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो जो डीबी टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है. आई हैव मार्क्ड देम विद अ ग्रीन कलर ओवर हियर एज यू कैन सी. ठीक है. एंड तो आपको एवरेजेस पढ़ना है. तो एवरेजेस में आप गए यहाँ पे आपको एक दिखेगा लिंक. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक
एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द यूट्यूब लेक्चर्स फ्रॉम हियर, ठीक है। ऐसे ही हर टॉपिक के लिए दिया गया है। अब लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने ये सब भी मार्क कर रखे हैं। द रीजन भी मैंने यहाँ पे भी मार्क कर रखा है बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डू द एट्थ वाला मॉड्यूल, ठीक है। रीजन बीइंग कि एट्थ वाला मॉड्यूल में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो डूइंग द फर्स्ट 7 मॉड्यूल्स विल हेल्प यू, ठीक है। ऐसे ही इफ यू विल सी इफ आई गो बिलो अलजेब्रा में भी आई हैव मेंशन्ड द ग्रीन टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू कवर। रेड वाले जो टॉपिक्स है यू कैन अवॉइड। द रीजन अगेन ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इन पे जाना, उसके पहले यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है एज सच, ठीक है। एंड या अब जैसे देखो इन इक्वालिटीज में देयर 8 वीडियोस, पर आप केवल फर्स्ट वीडियो ही कर लो, बाकी वीडियोस करने की कोई इतना जरूरत नहीं, नीड नहीं है, ठीक है। एपी की सारी करनी है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे देखो 5 तक मार्क है, 10 11 तब करो जब आपके पास ज्यादा टाइम हो, बाकी देर इज नो नीड, है ना। तो ऐसा आई हैव कस्टमाइज दिस फॉर द बीबी डीबी एग्जाम, ठीक है। एंड नंबर सिस्टम न्यूमेरिकल ऐसे ही सब सब टॉपिक्स के लिए मेंशन है। ज्योमेट्री के लिए आई हैव नॉट मेंशन द वीडियोस, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। यू कैन वॉच लाइक यू कैन सर्च द टॉपिक्स इन द यूट्यूब एंड वहां से आप एक अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो। जो मेरे पास चैनल्स थे वो एक्चुअली बहुत हाई लेवल के दैट वर नॉट रिक्वायर्ड इन द डीबी टेस्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन देम। एंड सो यू कैन गो थ्रू दिस एक्सेल शीट एंड डाउनलोड इट, द डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। यू कैन ऑल्सो टेक अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन विद मी एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। So, if I talk about your key points to remember, you need to practice all the 3 sections, which is your maths, logical reasoning, and English daily. Be consistent. जितना consistent रहोगे उतना better रहेगा. Try to complete the syllabus by 1st of July and take weekly test. Weekly test means कि like आपने इस हफ्ते में मान लो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसएससी पढ़ा है, तो सैटरडे या संडे को एक दिन पकड़ के उसका वापस एक रिवीजन दो, उसके क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय वीकली टेस्ट, ठीक है। और एटलीस्ट एग्जाम के पहले 5 से 7 मॉक्स जरूर दे देना, ठीक है। दोज आर रिक्वायर्ड and you can also buy the mocks for the DB test from me as well for rupees 39. It will be in a PDF format, of course, because I don't have a website. And yeah, that you can like वहाँ पे question mention होगा and you can start solving yourself by keeping a timer by your side, ठीक है। And yeah, I will provide the answers to you over there. In fact, you can get the first mock for free and try it out, ठीक है। So DM me for that. एंड या सो एग्जाम्स को भी अराउंड टाइम है। अगर आप 20th के आसपास देख रहे हो, कभी भी वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे टूडेज डेट पे आज अपना डेट मेंशन कर देना एंड यू विल गेट टू नो कि कितना दिन बाकी है। एंड सो आप कुछ टॉपिक्स को लाइक यहाँ पे सिंपल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने 6 डेज दे रखे हैं, तो वो 5 दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। पर 6 डेज से ज्यादा नहीं देंगे, दैट इज व्हाट आई मेंट, ओके। या एंड देखो सोर्सेज टू प्रिपेयर कौन से अगर प्रैक्टिस करनी है, सर्वेश वर्मा क्वांटम कैट अमेजिंग बुक, VARC एसपी बख्शी, like VARC के लिए एसपी बख्शी, वर्ड पावर मेडिजी एंड ब्रेन मार्टिन आर अमेजिंग अगेन। लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑन एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो गेट द टॉपिक वाइज शीट्स फ्रॉम मी, आई विल प्रोवाइड देम यू फॉर 19 रुपीज पर टॉपिक, है ना। एंड या gk.today.in जैसे वेबसाइट पहले बता रखी है, इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड various topics of general awareness, ठीक है। So this is all about this video, guys. I hope you like the video. Please make sure to hit the like button, channel पे नए तो subscribe भी कर लेना। I am Vaibhav Goenka doing my BBA from IIM Bangalore. I come live daily to answer the questions related to IP, MAT, CUT, and the other entrance exams. Like if it's like counseling session over the YouTube live. So yeah, make sure to hit the like button and let's meet in the live, ठीक है। Bye bye, take care, and all the best. I hope you like the video. Thank you.